Hello students, welcome back to the Tantray physics classes. Here is a problem on simple harmonic motion for IIT aspirants, and NEET people, students can also learn things from this problem. तो प्रॉब्लम कुछ ऐसे हैं कि ये रॉड है, it is held by two springs like this. Springs are fixed on the two ends, but the spring length is very small. वो पहले कंडीशन है, ये स्प्रिंग का जो लेंथ है वो बहुत कम है. तो हम क्या करने जा रहे हैं, मैं इस रॉड को थोड़ा सा रोटेट करूंगा, मतलब ये पार्ट विल गो अप एंड दिस पार्ट विल गो डाउन. थोड़ा सा रोटेट करूंगा, थोड़ा सा रोटेट जब इसको करूंगा मैं बाय स्मॉल एंगल, दिस स्प्रिंग विल स्ट्रेच एंड दिस विल आल्सो स्ट्रेच. When the two springs will stretch, they will create restoring forces. They will create restoring force, and those restoring forces in the two springs will create torque on the rod. The torque on the rod is such as the rod will rotate like this. It will oscillate. It will make torsional oscillations. We have to find, first of all, we have to prove those torsional oscillations are simple harmonic motion oscillations, and second, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, और या फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड भी क्या है. तो अगर आप तीन में से एक निकालोगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, तो आपको तीनों मिल जाएंगे. बट बेटर इज टू फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द टाइम पीरियड. So let me rotate it a little bit. Give it. It is in equilibrium, but we will turn it, and there will be net force on the rod if I turn it by a little small angle. So new configuration will be like this. ये rod कुछ ऐसे हैं, तो ये rod कुछ यूं होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा ये rod ऐसे with the center this, और ये जो spring है, ये जो spring है, this spring will be now like this. This spring will be now like this, and here the spring will be like this. Spring will stretch here, spring will, this spring, अगर मैं कुछ ऐसे ही बनाऊं, यहां पर ही बनाऊं, तो यहां पर कुछ ऐसे होगा. अगर मैं कुछ ऐसे ही बनाऊंगा ये यहां पर, ऐसे कुछ, तो ये स्प्रिंग जो ये पॉइंट यहां था, ये पॉइंट यहां होगा, और ये स्प्रिंग कुछ ऐसे, और ये स्प्रिंग कुछ ऐसे. तो स्प्रिंग विल स्ट्रेच लाइक दिस, दिस स्प्रिंग विल स्ट्रेच लाइक दिस, बिकॉज यू आर रोटेटिंग इट थ्रू एन एंगल थीटा, थ्रू एन एंगल थीटा, थ्रू एन एंगल थीटा, थ्रू एन एंगल थीटा. अगर इसका लेंथ L है और मास M है, तो उस सूरत में क्या होगा, पहले इसका जो लेंथ था स्प्रिंग का, वो दैट वाज टेंडिंग टू जीरो, इट वाज वेरी स्मॉल, इसलिए ये जो लेंथ बढ़ा, तो दैट इज द स्ट्रेच. क्योंकि इनिशियल तो लेंथ अगर जीरो हम लेते हैं, तो फिर इसका मतलब ये स्ट्रेच हो गया, और ये भी स्ट्रेच हुआ. तो इस स्ट्रेच की वजह से इट विल ट्राई टू पुल द रॉड बैक, और इस स्ट्रेच की वजह से इट विल पुल द रॉड बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. सो फोर्स विल बी लाइक दिस. तो हमें देखना है पहले ये स्ट्रेच कितना है, हाउ मच इज दिस स्ट्रेच. तो ये स्ट्रेच अगर देखा जाए, इट इज L/2 इंटू थीटा, राइट, और ये स्ट्रेच भी है दिस L/2 इंटू दिस थीटा. तो इस वजह से ये व्हाट इज टॉर्क हियर एंड व्हाट इज टॉर्क हियर, एंड दीज टू टॉर्क्स विल एड अप, बिकॉज दिस टॉर्क will be anti-clockwise and this torque will be also anti-clockwise. ऐसे देखो, ये R है, तो R क्रॉस F, ये जो R क्रॉस F है एंटी क्लॉकवाइज, और ये R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि टू टॉर्क्स विल एड अप. सो देयर विल बी टोटल टॉर्क ऑन द रॉड. वी हैव टू फाइंड द टोटल टॉर्क ऑन द रॉड. हाउ मच इज द टोटल टॉर्क? फर्स्ट ऑफ ऑल, the torque is, okay, force, how much is the force created by this spring? If the spring constant is K, the force due to each spring is equal to K times this stretch. This stretch is L/2 theta. ये है force due to each spring, force
created by the spring here, force created by the spring here. But now what is the torque due to this force? The torque due to the force is, due to this force, the torque is force into force on that this distance L by 2, this force into L by 2, that is K L by 2 theta into this L by 2, this one L by 2. But the same amount of torque is from here, so it is 2 times, right? And the torque is restoring. It will try to bring the rod back to the mean position, straight, so it is negative. So torque is equal to 2 gets cancelled, it will be minus K by 2 L square theta. This is the torque produced on the rod, restoring torque, and this torque will try to get the rod back to the mean position, back to the horizontal position. But it will overshoot the horizontal position and will go like this. So it will be like this, something like this. ऐसे फिर ये वापस आने की कोशिश करेगा ऐसे, but it will overshoot, so it will go like this. It will do like this. So we have to prove they are simple harmonic motion, simple harmonic oscillations. So this torque will be written as I alpha minus K by 2 L square theta. Now alpha is equal to minus K by 2 L square theta by I. Now what is the moment of inertia of the rod about the center of mass here? Because it is rotating about the center of mass. Like this. Like this. So it will be 1 by 12 ml square, if you remember the moment of inertia of the rod about the center of mass. So what should I write? Put I here and find angular acceleration. The angular acceleration can be written in the form as angular acceleration alpha is given by, that is minus K by 2 L square theta divided by 1 by 12 m L square. This gets cancelled as it should. Alpha is equal to 12 ऊपर 2 नीचे, that is minus 6 K by m theta. Recognize the equation. Recognize the equation. This equation tells you that the rod will oscillate simple harmonically. How? Because the base equation of simple harmonic motion is minus omega square theta. Torsional oscillations का ये base equation है simple harmonic motion के लिए. और linear oscillations के लिए A is equal to minus omega square theta. तो linear oscillations यूं हो गया, तो torsional oscillations यूं हो गए. ये torsional oscillations है और ये बैक एंड फोर्थ का लीनियर ऑसिलेशंस है. लीनियर ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन ये है ओमेगा स्क्वायर एक्स और ये है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा. ठीक, तो अब मुझे बताइए, द इक्वेशन टेल्स यू दैट इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक एट द इक्वेशन एंड कंपेयर दिस विद दिस इक्वेशन विद द जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो आपको यहीं से पता चलता है कि ये रॉड जो है इट शुड ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली. दूसरी बात ये है कि आपको अब डायरेक्टली मिलेगा, यू विल गेट डायरेक्टली ओमेगा. तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन का स्क्वायर, दैट इज 6 k by m. व्हाट इज ओमेगा? दैट इज रूट ऑफ 6 k by m. तो इससे आपको f भी मिलेगा बिकॉज f इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई. और लगेगा t भी मिलेगा आपको, t इज इक्वल टू 2 पाई ऊपर ओमेगा नीचे. तो वंस यू नो ओमेगा, यू नो f, you know t. Omega is angular frequency of the rod. How many radians of angle it cuts in 1 second, and yeah, how much phase it cuts in 1 second. F is how many oscillations it makes in 1 second, and t is what's the time in which one oscillation is completed. This is the problem, standard or a problem, and neat people can also be benefited here, and IIT aspirants can also be benefited. This is the example of torsional oscillation, simple harmonic motion. I hope that you continue to watch my lectures so that you could be benefited. Thank you.